प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी लाइव में जुड़ने के लिए। भाई कमेंट करिए आप लोग कहाँ से हैं। भाग जो मैंने कर नहीं कमेंट दिखाते नहीं ना, तो कमेंट का करवा बेचार कमेंट आप तो चाहे क्या हो देख के करते हैं। प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग भाई। अरे एक आध तो कमेंट करके जाइए। जितने लोग जुड़े हो एक एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। और आप बताइए कैसे हैं भाई। लाइक कर दीजिए प्लीज़ आप लोग। कमेंट कर जितने कमेंट करें। थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। आप भाई हैं कि बहना हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपोर्ट करने के लिए जी। लाइक कर दीजिए प्लीज़। 100 खिड़की दिखा दी इनका। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जो लोग जुड़े हैं। तो रोया तो चलेगी चाहिए। भैया आप कहाँ से हैं। जब से छूला तब से हाई सो आवेला ही नहीं पहले नहीं आवत रहा। हाय भैया, हेलो भैया। थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं और कमेंट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं भाई। भाई आप मैसेज क्यों वापस ले रहे हैं। ओके थैंक यू भैया। ओके ओके थैंक यू भैया आपको इतना सपोर्ट करने के लिए।
बोल रहे देखो दोनों चलावत रहे अलग अलग अच्छी तरह से आके निकाल के जी। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। भैया आप लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद भाई आपके पास समय हो तो कमेंट करिए, नहीं आप प्लीज़। कर बता निकाल के एफिशन दीदी डीजे। भैया समझ में नहीं पा रही हूँ मैं आपका कमेंट ही लास्ट वाला। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया लाइक करने के लिए। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कर दिए भाई, जितने लोग जुड़े हो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू भैया। देखिए एक भाई सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू भैया दो लाइक करने के लिए। जिसने लाइक किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू भैया। स्वागत है मेरी लाइव में, धन्यवाद। और कमेंट भी करके बता दीजिए भैया आप कहाँ से हैं जो लाइक किए हैं और कौन है। भैया आप अपना नाम बता दीजिए, प्लीज़ नाम बता दीजिए अपना। जहीर भैया ये क्या लिखे हैं? जहर, यही नाम है आपका भाई? अच्छा अच्छा भैया। कहाँ से हैं भाई आप?
ओके भैया, ओके भैया। थैंक यू भाई, प्लीज़, थैंक यू भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। हाय भैया लाडो बिहार भाई, बहुत अच्छा आपका। कैसे हैं भैया आप? और मुकेश भाई बताइए कैसे हैं आप? आज आप 2 दिन के बाद जुड़े हैं। फ्लैश लाइट ऑन करूं भाई? आप लेट जुड़े हैं और मैं तो लेट चुकी हूँ। ऑन करी कि नहीं? मेरा भाई है या उनका ठीक है, सिलेक्ट कम नहीं। ठीक है। 1 मिनट भैया। भाई आप बहुत लेट आए हो। अच्छा अच्छा भैया, कोई बात नहीं भैया। हाँ भैया, कैमरे में आ गई हूँ। थैंक यू लाइक करने के लिए। और बताइए भैया। नहीं भैया, खाना कैसे अंधेरे में पकाऊंगी? खा पी के सो रही थी, लेट चुकी थी और लाइव नहीं बंद था। हाँ भैया, काम तो आ ही जाता है भैया, ठंड का मौसम है।
और जहर भाई चले गए क्या? नाम जहर डाल दिए भैया। हाँ भैया जी ठीक हैं भैया, थोड़ा उनको बुखार आ रहा है इस समय, बाकी ठीक हैं, तबीयत डाउन है भी उनकी। अभी 11 बजने वाले हैं। किसको भैया? आपको? आ जाइए, आप बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है आपका। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो भाई आप? और सिलो तो रखी आवाज़ धीमा है ना, मोटा है ना। हाँ भैया, अभी मौसम चल रहा है बुखार का। अच्छा भैया, माजनपुर में रहते हैं। थैंक यू भैया। राकेश भैया, और बताइए आप कैसे हैं? आप तो बहुत बहुत पहले कमेंट आया था मेरे वीडियो पर, और तब से आपसे मुलाकात भी नहीं हुआ। जी भैया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मुकेश भैया, आप कैसे हैं? भैया आपका खाना हो गया मुकेश भाई? भैया जवाब तो दे रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आप खाना खा लिए? हाँ हाँ, सॉरी भैया, रेखा गुप्ता लिखा है, जी जी। हाँ
हाँ रेखा सिस्टर है। और रेखा बताइए कैसी हो? मैं ध्यान नहीं दी, आप देख लिए भैया, सही बात है। रेखा आरो कैसा है? तुम दी लिखी हो फिर भी मैं कमेंट नहीं देख पाई है। अच्छा ठीक हो। आरो के पापा आ गए ड्यूटी से कि अभी नहीं? अच्छा अच्छा भैया, खाना हो गया आपका? ठीक है भैया। रेखा लाइक कर दो। आज मैं फ़ोन लगाने वाली थी, फिर टाइम नहीं मिला तो नहीं लगाई। नहीं लगाने वाली थी कि दिल्ली में ठंडी तेज़ पड़ रही है ना, तो आरू को संभाल के रखना और उसको स्वेटर वेटर पहना के रखना। ठीक है रेखा, जो है लाइव चलत रही, अगर टाइम हो तो कमेंट करत रही हैं। ओके बाद हम बाइक कह देते ही, चूँकि दिक्कत होती है, 11 बज गए हैं, जीजा का सोने में दिक्कत होती है ना। सवेरे जल्दी उठा थी, 9 बोलत रहा, वैसे तो सो ना पाई है। हाँ रेखा ठीक है, थोड़ा बुखार उखार ही है आवत है, और बाकी ठीक है। हाँ भैया आप सोचे, आप भैया सही सोचे मदद करने के लिए, लेकिन भैया क्या करूँ, सुबह 4 बजे इनको ड्यूटी पर जाना रहता है, तो फिर अभी 11 बज गए हैं ना, और अभी इधर सोएंगे नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। 4 बजे जाते हैं ये ड्यूटी पर काम करने के लिए। हाँ दवा लाए हैं ले रेखा। सॉरी भैया, इसके लिए गुस्सा मत होइएगा। और ठीक है भाई, इतना सपोर्ट कर देते हैं आप लोग, बहुत मेरे लिए बहुत है। ऐसे सपोर्ट कर दिया करें बस भाई। भैया आपसे मैं पूछी थी कहाँ थे, आप बताए नहीं। चलिए इधर आओ। इधर आओ। जीजा अभी बैठे हैं, देख लो। गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया। अच्छा भागा जी ना। रेखा कहाँ कैमरा है, ठीक दिखाई देगा। ठीक है रेखा। गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया। नहीं रेखा, तेज बुखार नहीं है, अब ठीक है।
भैया फ्रूट के दुकान पे रहते हैं ना 4 बजे। अब तो बड़ी दुकान है, अब जो लोग आते हैं वो 4 बजे 5 बजे से आते हैं, तो 7-8 बजे तक वो लेके चले जाते हैं, तभी तो वो लोग अपना बेचेंगे 9-10 बजे तक। ठीक है भैया, आप लास्ट कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर। और आपके आने से ही मैं कैमरे के सामने आई, आप बोले लाइट ऑन करिए तो मैंने लाइट ऑन कर दी। अच्छा अच्छा भैया, कोई बात नहीं भैया, काम चल रहा था, आप अपना काम भी देखिए, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। और फिर टाइम रहेगा तो कल आ जाइएगा 5 मिनट के लिए भाई। ठीक है भैया, मैं अभी सबसे आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, चलूँ मैं। ठीक है भैया, अब सॉरी चाहती हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं गलत समझ रही हूँ आपको भैया। और चूँकि अभी ड्यूटी जाना है इनको 4 बजे से, नहीं तो फिर अभी मैं आपसे बात करती भाई। सुबह 3 बजे उठेंगे, फिर मंजन कुल्ला करके नहा के तब जाते हैं 4 बजे भाई, तो इसके लिए लेट होगा तो सुबह आँख नहीं जग पाते हैं ना। हाँ रेखा, क्या करूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब है, इसके लिए मैं कुछ की नहीं हूँ, कंघी वंगी कुछ भी नहीं की हूँ, तो कहाँ से अच्छी लगूँगी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम भैया। भैया मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, तो उस दिन मैं मजाक में बोली थी, आप अपने बड़े भाई को बोले कमेंट भैया अच्छे से पढ़ना, तो इसीलिए मैं बोली थी कि हाँ भैया कमेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, गलत लिखोगे तो मार भी खाओगे। भाभी जी, जाते जाते आप ये बता दीजिए, आपने कुछ अपने गाँव, क्या बता दूं भैया, बताइए। बता दीजिए, आपने कुछ अपने गांव, गांव आगे क्या बोलिए, मेरा गांव पूछ रहे हैं। मेरा गांव भैया यूपी प्रतापगढ़ है। नहीं रेखा, बुखार नहीं है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर दर्द कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ, पीछे पीठ का बहुत दर्द हो रहा 2 दिन से। अभी ज़्यादा बैठ नहीं पा रही हूँ ना, इसके लिए बैठ करके लेट जाती हूँ भाई।
नबिस नैना दोनों सो गए हैं। हाँ रेखा, दोनों लोग सो गए हैं। भैया आप कमेंट करिए। आप मेरा गांव पहुँचे आप भी बता दीजिए, चूँकि आप तो भाई बताए थे लेकिन मैं भूल गई हूँ। और आपकी खुद की दुकान है ये भी बताए थे, मैं भूल गई हूँ। भैया इधर ठंड नहीं है, अभी तो मैं लाइट ऑफ कर दी, नहीं दिखाती। इधर अभी फैन चल रहा है। ज़्यादा तेज़ नहीं, स्लो करके चलता है। अभी इधर ठंड नहीं पड़ रही है, सुबह पड़ती है 9 बजे तक, वही थोड़ा थोड़ा बस। हाँ रेखा, क्या करूँगी ऐसे। अभी मैं बोलती रहूँगी, चिल्लाती रहूँगी तो फिर ये सो नहीं पाएंगे ना, और सुबह उठना रहता है, फिर दिक्कत होती है इनको। वहाँ जाने के बाद फिर नींद आने लगती है, बोलते हैं। आरव के पापा आए हैं कि अभी नहीं आए हैं? हाँ भैया, कौशाम्बी बताए थे। कौशाम्बी भी यूपी में ही है भैया। अच्छा हाँ, है नहीं तुम लाल गोपाल का। हाँ हाँ भैया, ठीक है ठीक है, याद आ गया मुझे। आप ही हो बोल रहे थे ना कि लाल गोपालगंज में गया था, उधर रिश्तेदारी है। याद आ गया भैया। तो आप तो ज़्यादा दूर से नहीं हो ना, मेरे पास में ही हो।
ओके भैया, ठीक है, आप जाइए, सो जाइए, नींद आ रही है तो भाई कोई बात नहीं। थैंक यू भैया, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट भाई। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश यूपी वही तो मेरा भी है ना भाई। और आप गांव में रहते हैं, मैं सूरत में रहती हूँ भैया। आप बोल रहे हैं मुझे बुलाओ, आइए आप मेरे घर पे आइए। बाय। स्वागत है आपका जी। बस भैया, थैंक यू भैया, मुझे भी यही चाहिए। आप लोगों का प्यार दुलार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और आप लोग का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। बस मैं जिस चीज़ से लड़ रही हूँ वो सपना मेरा पूरा हो जाए बस भाई। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर एक दिन उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगी। अच्छा अच्छा भैया, कड़े शीतलन धाम है। हाँ तो भैया कड़े शीतलन तो जाते हैं ना। नहीं भैया, सो नहीं गए, बता तो रही हूँ कि कड़े शीतलन तो जाते हैं। सही बात भैया, आपका उधर ही है ना। हाँ भाई, कड़े शीतलन तो जाते हैं शीतला दर्शन करने। भैया आवाज़ नहीं जा रही है, मैं तो बोल रही हूँ भाई। सो नहीं गई हूँ भैया, अभी जग रही हूँ, आपका कमेंट देख रही हूँ। और आपका है कड़े शीतलन तो ठीक है भैया, जब गांव आऊँगी तो फिर मैं जब उधर जाऊँगी तो आपके यहाँ आऊँगी, आप भी आइएगा मेरे यहाँ भाई। आप कड़े से हैं भैया तो यूपी भाषा तो समझते हो, ये अवधी भाषा।
क्या भैया बोल रहे हैं? 24 मिनट और। गुड नाइट रेखा, गुड नाइट रेखा। अच्छा 2-4 मिनट और। अच्छा भैया, तो आप खाना खा लिए भाई कि अभी नहीं खाए हो? खा लिए हैं आप? हाँ, आप तो खाना खा लिए हैं। लाइट जला दी थी, यही सब दिखाई लगा था। मूली का पत्ता। ठीक है भैया, ठीक है भैया। आपकी आईडी यही है ना? मैसेज कर दूंगी मैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका आईडी मेरे पास आ जाएगा भाई, फिर मुझे मिल जाएगा।
थैंक यू भैया, आप सब्सक्राइब कर दिए हैं। मैं कमेंट डाल दूँगी आपके मोबाइल पे। हाय अंकित भैया, आमिल भाई है, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? इतने दिन के बाद जुड़ रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं भाई आप सब? आप ही हो मेरे देवर बन रहे थे ना? नहीं, खुद छिपाए हैं हमका। अभी आज तक आप नहीं बताए कि कहाँ से हैं। मेरा टाइम है भैया 9 बजे। 9 बजे से लाइव आती हूँ। अभी ये मुकेश भैया आ गए थे तो इसके लिए मैं जग गई, नहीं तो अब तक सो जाती हूँ भैया। आप तो इतने दिन से मैं परेशान थी, आप अपना एड्रेस नहीं बताए हो भाई। मेरा देवर और बन गए लेकिन एड्रेस नहीं बताए आपने। से 9 बजे से भैया 10, साढ़े 10, कभी कभी 11 बज जाते हैं। फिर साढ़े ज़्यादा करके 10:30 तक बंद हो जाता है। तो आप एड्रेस नहीं बताए तो मैं कैसे बनूं? मैं भी तो आपसे पूछी आप कहाँ से हो, आप भी नहीं बताए तो मैं कैसे बनूं? आप मुझे नहीं बताए तो मैं भी नहीं बनी। आप बताइए आप कहाँ से हैं तो मैं भी बन जाऊंगी। छोटा देवर बेटा के समान होते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भाभी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बताए थे भाई, आप यही पूछ रहे थे पहले आप भाभी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पहले आप बताइए। फिर मैं बोली पहले आप बताइए कहाँ से हैं, फिर उसके बाद मैं बनूंगी। अच्छा, सूरत में कहाँ से हैं? सूरत में तो मैं भी रहती हूँ ना। टच नहीं होता है मैसेज पे। गुड नाइट भैया जी, गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया। थैंक यू भैया, बाय बाय भैया, सो जाइए भाई। अच्छा, मंदिर रोड। दी तो थी भैया, जब आप कब नहीं जवाब दी थी? वो क्या है ना, कोई कोई मैसेज पता नहीं क्यों हाइड करके आ जाता है भैया, तो वो मुझे नहीं दिखता है। अभी ये जो आप गुड नाइट का मैसेज भेजे इस पर क्या लिख के आया है मेरे पास? दिस मैसेज इज हाइड फॉर रिव्यूज। तो ये मुझे नहीं दिखता है। फिर जब मैंने रिव्यूज पर टच किया तब वो मैसेज आपको दिखा। इसके लिए किसी किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। मंदिर रोड किधर पड़ेगा भैया? उसके आसपास की एरिया बताओ।
गाँव भैया बच्चों की छुट्टी होगी तो मैं अप्रैल के महीने में आती हूँ, लास्ट अप्रैल मई तक गाँव आती हूँ। अभी तो बच्चों का स्कूल है, मैं नहीं आती हूँ। अमिल भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लगता है चले गए हैं। ठीक है भैया, मैं मैसेज कर दूंगी। भैया मैं सूरत में हूँ, आपको कौन जगह बताऊँ? पर्वत पाटिया आपको पता है? थैंक यू भैया, बस आप लोगों से यही उम्मीद है मुझे। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए भाई, ऐसे आप लोग अपना अपना आशीर्वाद देते रहिए बस। मैं बहुत खुश हूँ भैया आप लोगों से, और आपका कमेंट से मैं बहुत खुश हूँ भाई। भैया आप बताइए, आपको मालूम है सरदार मार्केट मालूम है? नहीं नहीं भैया, भूल नहीं जाऊंगी। सुबह मैं कमेंट कर दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी। आप कमेंट किए होंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, भूलूंगी नहीं भैया। क्योंकि मेरे पे जितना कमेंट आता है मैं सभी भाइयों को रिप्लाई करती हूँ। भैया अप्रैल में गांव जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय भैया। थैंक यू भैया सपोर्ट करने के लिए भाई, और ऐसा अपना अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना अपना आशीर्वाद देते रहिए भैया। आपका हाथ मेरा सिर, सपोर्ट देते रहिए बस भाई ऐसे, क्योंकि आप लोगों के ही सहारे मैं आगे निकल सकती हूँ भाई। आप लोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती मैं। लाख कोशिश करूँगी, लेकिन जब आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ भाई। मिर्चा कहाँ पाई गया? बाय भैया, बाय भैया।
हाय गुड्डू, और बताइए कैसी हो। मुझे तो नींद आ रही है अब। नहीं गुड्डू, मैं सो रही थी, दो भाई जुड़ गए, फिर नींद खुल गई और मैं सो ही रही हूँ। मुझे चूँकि नींद आ रही है, अब कमेंट बराबर नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ हाँ गुड्डू, ठीक हूँ मैं। गुड नाइट। अच्छा अनिल भैया, मालूम है आपको। हाँ तो भैया आपको मालूम है तो मैं वहीं रहती हूँ। गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया। सो जाइए आप भी, चूँकि अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मैं बराबर कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, आँख मूंद जा रही है भाई।